Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Junaid Ghori, and today we are going to talk about the research procedure. The steps involved in research procedure. Whenever we want to conduct our research, we have to follow some steps. And for this particular topic, we are going to consult the book Mass Communication Research, and it is authored by Dominic and Weimer. Today, the topic of our discussion is research procedure. There are certain steps that we have to follow when we conduct research. I'll be bilingual for all the people. People from the outside country, especially like we have students from Nigeria, from Somalia, from Afghanistan, and some Arab countries also with us. So I'll be talking in both language, in English and Urdu, in Urdu for the benefit of our own local students. And I'll be giving example from our local media, our local society, so that we can relate to the things that we study in the books written by the Western scholars, right? So as far as the steps of research process are concerned, the first step, as we all know, that the scientific procedure is a systematic procedure. And a systematic procedure means a process that goes step by step. As you guys remember in our previous lectures, I have told you that the scientific process, any scientific inquiry, it starts from the observation, your personal observation. You observe something, then you assume about it. There is some assumption that comes in your mind, and then there is some question that comes into your mind, and then for that particular question, to answer that for particular question, you collect some data, you see. And after some collecting data, you decide on what methodology you will test this data. आप कौन सी methodology use करेंगे कि आप उस जो collected data है उसको आप analyze कर सकें. Once you are go through the collection and analysis of data, then you go towards the interpretation and then the conclusion and then the repetition. So in a nutshell, what you can say is that the research process, as we have already discussed in our previous classes, that the research is a scientific process, scientific procedure, and a scientific procedure always follows certain steps. Okay. Similarly, when we talk about the mass media research or the social research, we say that the mass communication research or the social research has to go certain steps. Okay. And in that particular you can say context, there are few steps that you have to follow, and these are 8 steps that we have to follow. These steps are available in Dominic in Weimer's book on page number 16. Selection of problem, then the review of existing theory and research, and then the statement of hypothesis or research question, and then determination of appropriate methodology or research design, data collection, analysis and interpretation of data, then the representation or the presentation of results, and then the replication of this whole process. You see, these are 8 steps, as I've just mentioned earlier, that once you want to conduct research in mass media field, or you want to explore, understand, or explain the mass communication phenomena, mass communication as a social phenomena, you have to conduct a research, and that research we do in 2 different fields. You see, academic field and the practical field. Academic field is known as the basic research field, and the business field is known as the applied research field. If you are working in some media organization and you conduct research there, for instance, what happens when Javed Chaudhary tells you as his research associate
कि जी मैंने आज इस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है, आज मैंने फॉर इंस्टेंस फवाद चौधरी को बुलाना है, और फवाद चौधरी आप सबको पता है कि बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही इज वेरी एक्टिव, he comes up with facts and figures and then he speaks very well, very eloquent, और वो बड़ा तेजी से बोलता है, तो इसलिए मुझे उसको कन्फ्रंट करने के लिए फैक्ट्स चाहिए, जो मेरे ज़हन में ये मेरे सवालात हैं जो मैंने उनसे पूछने, इस पे मुझे तमाम डायमेंशंस पे जो है वो डेटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे एज ए रिसर्च एसोसिएट, आप उन तमाम क्वेश्चंस को जहन में रख के उसके हवाले से डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करके उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपने जो आपका प्रोग्राम का होस्ट है जावेद चौधरी, उसके सामने आप रखेंगे। तो ये मैस मीडिया रिसर्च के हवाले से एक एग्जांपल है फील्ड रिसर्च की, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू इन द अप्लाइड रिसर्च, व्हाइल बेसिक रिसर्च, as I've told you in our previous classes, basic research is the theoretical research. This has to do with the production of knowledge, okay, theory construction, theory testing, theory rejection or approval of theory, you see। तो जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के हवाले से हम रिसर्च करते हैं उसको हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं, या एकेडमिक रिसर्च बोलते हैं, या थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं। और वो रिसर्च जो है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो रही होती है, राइट। तो ये इसको हम आगे अपने अगले लेक्चर्स में हम इनको इंशाल्लाह मजीद डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज टुडे द मेन फोकस इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, and particularly we will be talking about this in this short lecture about the selection of problem, selection of research topic or the selection of problem. My dear brothers and my students, this particular step is very important. You see, it's just like when you want to build a skyscraper, a huge building. For that particular project you have to have a very strong foundation. आपको जो उसकी बुनियादें बनानी है वो बहुत स्ट्रांग बनानी है, जितनी स्ट्रांग बुनियाद होगी उतनी ही आप जो है वो हाई राइज स्काई राइज बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। यू गेट माय पॉइंट ना। अब होता क्या है कि जब आप जैसे कोई भी इंजीनियर किसी जगह बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले उसका जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, ऐसे ही है ना, कि यहाँ ये जमीन कैसी है, इसमें हम कितनी गहराई तक इसकी फाउंडेशन बनाएं, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट हाउ हाई राइज बिल्डिंग वी आर गोइंग टू बिल्ड हियर, यू सी। तो उसके मुताबिक वो देखते हैं कि क्या ये जमीन उस कदर हाई राइज बिल्डिंग को अफोर्ड भी कर सकती है, कंटेन भी कर सकती है या नहीं, सही है। तो वो हाई राइज बिल्डिंग या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स। सिमिलरली when you want to conduct a research in mass media research, when you want to explain, explore or describe the social phenomena or the impact of mass media or the usage of mass media or the role of mass media, first of all you have to be very clear about what you are going to research on. यानी आपने करना क्या है, सबसे पहले इस पे आपने बड़ा क्लियर हो जाना है। तो हमें जो डोमिनिक एंड मीमर की किताब है उसके अंदर इस पे बड़ी क्लियर एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि वंस यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन सम टॉपिक, देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया फॉर दैट टॉपिक, यू सी, you have to follow that particular criteria, and that is why they say that the selection of topic or the selection of problem and then making a topic out of it is a very tricky stage, you see, very sensitive stage. आप जब इस स्टेज में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो मैं टॉपिक चूज कर रहा हूं वो टॉपिक जो है इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हम अगले स्टेप पे डिस्कस करते हैं। बिफोर वी गो टू द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड इज दैट वेयर शुड आई गेट द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक। यानी मैंने रिसर्च करनी किस पे, आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में आता है कि यार व्हाट टॉपिक, what problem, I mean what could be the problem that I should be working on, what are the questions that I should be answering, what is the problem I should be finding the solution for, you see।
तो इसके लिए एज वी टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स के सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन है, your observation. As I've told you earlier, in the scientific research or in the scientific method, any inquiry starts from the observation, personal observation. As a researcher, you observe something or somebody observe it for you and tell you to do these things, you see. तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है. तो आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई, कोई टॉपिक नहीं दिया गया, तो आप अगर एम्पिरिकली आप ये देखना चाहते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, एरियाज हैं, कहाँ से जहां से आपको टॉपिक का आइडिया मिल सकता है, तो उसके हवाले से हमारे पास ये वी हैव दीज 6 डिफरेंट रिसोर्सेज. अमंग्स देम इज द प्रोफेशनल जर्नल्स, मैगजीन्स एंड periodicals, रिसर्च समरीज, द इंटरनेट, एवरीडे सिचुएशंस जहां पे आप आपका एक्सपीरियंस और आपकी ऑब्जर्वेशन भी काम आएगी, and then the archive data. Now, very briefly, I'll go through these 6 resources, and then we'll be talking about the criteria of the research topic. Now, these sources, these 6 sources can give you a hint of the problem. Please, you have to pay the attention that these sources will not give you the topic as it is. I mean, ये है जी topic जिस पे आपने research करनी है. No. That would be a very rare case, and that would be in a case where you want to replicate a study. वहां पे तो ये आप as it is कोई टॉपिक ले सकते हैं. अदरवाइज आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा, उस आइडिया में से या कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी, उस प्रॉब्लम को आपने जब एनालाइज करना है या उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, या कोई रिसर्च क्वेश्चन आपको मिल जाता है और उसका आपने आंसर ढूंढना है, तो उससे आपको ये आइडिया मिलेगा और उसको आपने इंडिजनाइज करना है, लोकलाइज करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक उसको ढालना है. तो पहला जो सोर्स है हमारे पास वो है प्रोफेशनल जर्नल्स. व्हाट आर दीज प्रोफेशनल जर्नल्स? लाइक professional journals may be the research journals and maybe from a particular field. Suppose you are a student of mass media studies, okay, mass communication. Once you want to conduct research during your BS, MS or PhD, you will go to the renowned research journals. Please note it down that you will go and search for the famous, renowned, internationally renowned and very well credible research journals, and you will go to their websites or their latest publications, and you will try to look into the contents of those journals कि इस नए इशू में इस जर्नल के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च हुई है. तो मुमकिन है वहां से आपको कोई टॉपिक क्लिक कर जाए और आप ये कहें कि ये टॉपिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इस पे रिसर्च हुई है, ये टॉपिक है इसमें सीरिया के अंदर रिसर्च हुई है, ये टॉपिक है इसके अंदर जो है वो कनाडा के अंदर रिसर्च हुई है. तो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, द आंसर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया. यू सी, तो इस तरह से आपको एक रिसर्च जर्नल से आइडिया मिल सकता है. प्रोफेशनल जर्नल की एक और एग्जांपल आप ले लें. फर्स्ट करें यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके. तो मेडिकल साइंस के अंदर लेटेस्ट रिसर्चेस जो है वो पब्लिश हो रही होती हैं. लाइक आप जो है वो मिसाल के तौर पे वी आर गोइंग थ्रू द कोविड-19 डेज. Every day we are receiving some updated and modified and well researched data and answers of the questions related to COVID-19. तो उनसे आपको आइडिया मिल सकता है. आप एज ए साइंटिफिक मेडिकल रिसर्चर आप ये देखेंगे जी कि अगर सपोज यूके के किसी मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने ये चीज फाइंड आउट की है, तो वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान की एनवायरमेंटल कंडीशन से डिफरेंट है. तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो फाइंडिंग्स वहां पे हैं क्या वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है या यहाँ से वो पाई जा सकती हैं, रिसीव की जा सकती हैं. तो आप सेम काइंड ऑफ रिसर्च यू कैन रेप्लीकेट हियर इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट. सही हो गया. सो दिस इज हाउ द रिसर्च जर्नल्स और द प्रोफेशनल जर्नल्स कैन गिव यू सम आइडिया और हिंट अबाउट द टॉपिक. Similarly, my dear friends, magazines and periodicals, they can become a good source for idea about the research
टॉपिक ऑफ रिसर्च और द प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च, कि आप देखें कि मैगजीन्स के अंदर और पीरियोडिकल्स के अंदर मुख्तलिफ सोशल, पोलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और दीगर हमारे जो इंटरेस्ट एरियाज हैं उसके हवाले से मैगजीन्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं. वी आर फाइंडिंग ऑल दीज रिसर्च मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स अराउंड अस. उनसे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आप जो है वो इस पे रिसर्च कंडक्ट करें. मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी से एक एमफिल और पीएचडी स्कॉलर ने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं. उन्होंने फेक न्यूज के हवाले से एक मॉडल डिवाइस किया है. उन्होंने एक मॉडल डिवाइस किया है कि जिससे प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो दैट्स वेरी लेटेस्ट and very important domain and area that we have one of our colleagues have found out. तो आप क्या कीजिए कि आप वही वाला मॉडल जो है वो आप, अब ये जो खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी के मैगजीन के अंदर पब्लिश है. तो अब ये खबर मुझे वहां से मिली है, या आपको आपकी जो एवरीडे लाइफ है ये वहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ये खबर मिल गई है. सही है. तो अब यहां से आपको आइडिया मिल गया है कि ओके, दैट पर्सन हैज डेवलप्ड दिस मॉडल. Now let me try it and apply it in some Pakistani context. For instance, if he has conducted research during 2017 and 18 and he has today published his research thesis in 2022, so you can apply that model in today's world, in the world of 2022. कि आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि आज ये जो फेक न्यूज, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीका ऑर्डिनेंस भी चल रहा है, ये एक हॉट डिबेट है कि फेक न्यूज डज एग्जिस्ट देयर, इसके क्या इम्पैक्ट हैं और कैसे इसको हम जो है वो कंटेन कर सकते हैं, या इसका सोसाइटी के ऊपर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है. ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव क्या होना है. तो आप उसको यानी अप्लाई कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल, वो पीरियोडिकल ने, उस मैगजीन ने या उस व्हाट्सएप ग्रुप ने, आपकी सोशल लाइफ ने आपको एक आइडिया दे दिया है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए. सिमिलरली रिसर्च समरीज, प्रोफेशनल जर्नल्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, they publish their research summaries. Okay, they conduct research and they publish their research summaries. So those research summaries can also become a good source of idea for the project of your thesis at MS, BS or PhD level. Okay, similarly internet, you are using digital media. Okay, you are using Twitter, you are using Instagram, you are using Facebook. अब और भी कई सारे ज़ाहिर है सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि हम अभी तक यूज़ नहीं कर रहे लेकिन बहरहाल मौजूद हैं. तो आप में से कई सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे. तो वहाँ से आपको जो है वो कोई आइडिया मिल सकता है कि जिस पे आप जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकें. मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि माय किड्स, they use Snapchat when they want to capture some image, you see, and while they are using it, they are prone to different kinds of messages or promotional activities that are going through the Snapchat. Now those activities or those messages, they one way or the other affect my kids. The other day I observed something in my kids and I asked my elder daughter, where did you find it? How did you do it? I mean, who told you about this? I don't think this thing would have been discussed in your classroom, or the teacher would have talked about it. Where did you find it? I mean, where did this kind of idea come from? And she abruptly told me, Baba, don't you know that I found it on Snapchat? So I was kind of shocked. Like being PhD in mass communication, I did not know that, but she knew it. You see, so as a researcher, any day any new thing can become a source of research for you. Believe me, that was a kind of wake up call for me. I mean, I being student of media studies, I should be looking into these things. See, so this is how the internet around us can give you different kinds of ideas where you can conduct research. Everyday situation, the next source,
I've already talked about these things. Everyday situation can be your social life, your personal life, your academic life, your professional life, or your social life. I mean, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोग जो है वो बातें कर रहे हैं. For instance, let me give you an example from latest price decrease in petrol. I mean, the other day, Prime Minister Imran Khan announced that the price of petrol is decreased by 10 rupees per liter. Now, different people have raised different kinds of questions. कि हम तो ऑलरेडी गरीब हैं, हम ऑलरेडी IMF के जो है वो पैकेज पे चल रहे हैं, तो आपने ये कैसे इस प्राइस को जो है वो कम कर दिया. तो ये एक जाहिर है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी नेगेटिव हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है. लेकिन आपके पास, मेरे पास, वी बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, वी बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया स्टडीज, हमारे पास इस पे रिसर्च का एक बेहतरीन जो है वो टॉपिक निकल सकता है, एक बेहतरीन आइडिया निकल सकता है कि इज दिस अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स. If this is a political discourse, how does it impact the voters? I mean, अच्छा, उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि you can go to the public survey. You see, you can go to the public and ask the public कि आप जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं. No, इसका थर्ड जो एलिमेंट है जो आपको आइडिया दे सकता है वो ये दे सकता है कि how media is portraying this step by the government. कि एक तरफ दुनिया में जंग लगी हुई है, प्राइस हाइक हो रही है पेट्रोल में, हर चीज महंगी हो रही है और हमारे यहाँ कम हो रही है. तो आपने नोटिस किया कि एक टीवी चैनल सिर्फ उन लोगों को माइक पकड़ा के उन लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहे हैं जिन्होंने इस स्टेप के अगेंस्ट बात की है, और एक टीवी चैनल ऐसा है जो सिर्फ उन लोगों की बातों को आपके सामने पेश कर रहा है स्क्रीन पे जिन्होंने उसके हक में बात की है. तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो है वो किसी एक स्टेप के प्रो में हो और एक सारे के सारे जो है वो कॉन में हो, उसके नेगेटिव हो. तो आप एज ए रिसर्चर साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, साइंटिफिक और एम्पिरिकल फाइंडिंग देने के लिए आप इस पे पब्लिक सर्वे कर सकते हैं. तो दिस कैन बिकम अ ग्रेट आइडिया फॉर मैस मीडिया रिसर्च. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्काइव डेटा कैन बिकम अ ग्रेट सोर्स. यू गो टू द लाइब्रेरीज, you go to the public libraries, national libraries, university libraries, and even the media outlet libraries, and you go and find out कि for instance हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप जाएं और मैस कम्युनिकेशन के जब आप कबर्ड की तरफ जाएंगे तो आप वहां पे जाके देखेंगे पिछले 2-3 साल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च हुई है. Is there any topic that is still significant, I mean, or has some kind of relevance? You go and conduct research on that. Similarly, archive data can become a source of secondary data also. I mean, in previous lecture we were talking about the secondary data. Like secondary data also can also become the source of some new research. For instance, let me give you an example. You found out a thesis. You find a thesis in our library where you see that the student has conducted research about the students' opinion regarding mass communication faculty in our university. Okay, so you see that the research was conducted in 2010. Now we are sitting in 2022. It's been 12 or 13 years now. You want to see that how the opinion has changed, up to what extent has changed. No, there are two ways to conduct that research. अब आप ये कीजिए कि जिन लोगों से उस स्टूडेंट ने रिसर्च की है 2010 में, आप उन्हीं से रिसर्च करें तो आप एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर आप एंटर हो गए हैं. ये क्या है, कैसी होती है, अब कमिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे. या आप करंट स्टूडेंट से जो है वो वही सवाल, वही जो मेथोडोलॉजी है वो अप्लाई करके आप वो रिसर्च कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंपेयर देम कि 2010 में क्या ओपिनियन थी और आज क्या ओपिनियन है. सो आर्काइव डेटा, they can also become a source of idea for you when you conduct research. Now, these are the 6 sources which can become a source of idea for you for conducting a research. Now, once you have selected some problem or issue, you narrow it down as a topic and then you start conducting research. Before you start conducting research, you have to answer 8 questions regarding your topic.
कि जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है उसके हवाले से डोमिनिक एंड वीमर की किताब में 8 सवाल हैं जिनको आपने जो है वो आंसर करना है। अगर आप उनको प्रॉपरली आंसर करने में कामयाब हो जाते हैं, जितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप पॉजिटिव में आंसर करेंगे, उतना ही टॉपिक आपका जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, सूटेबल होगा, और वो आपके लिए, आपकी रिसर्च के लिए, आपकी रिसर्च की वर्थ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब वो टॉपिक जो है, जो डिटर्मिनिंग दी टॉपिक रेलेवेंस, उसमें जो 8 क्वेश्चन हैं वो इस किताब के पेज नंबर 20 से ऑनवर्ड मौजूद हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज द टॉपिक टू ब्रॉड। यानी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जब आपने टॉपिक चूज कर लिया, एरिया चूज कर लिया, तो अब आपने उसको नैरो डाउन करना है। यानी इतना सा काम करना है जो आप कर सके। आई मीन यू डू नॉट जंप इनटू द सी फॉर लर्निंग हाउ टू स्विम, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉन्ड। यू सी, आपने इसी तरह से जो जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपने टाइम को देखना है, अपनी एनर्जी को देखना है, अपनी कैपेसिटी को देखना है कि आप इस टाइम, एनर्जी और कैपेसिटी में रह के इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो टॉपिक को आपने नैरो डाउन करना है। फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। You want to find out the first and second level agenda setting of Prime Minister Imran Khan's speeches in Pakistani media. You see, एजेंडा सेटिंग का एक हमारा ये टॉपिक है। तो क्या आप जो है वो इमरान खान is in politics since last 22-24 years. So what you are going to do? You are going to conduct research on his speeches that he has delivered since last 22 years. No, not at all. So first step would be to confine yourself within a particular time frame. आप ये कहेंगे कि मैंने लास्ट 1 ईयर का जो है वो उसकी पॉलिटिकल स्पीचेस जो हैं या कोई भी स्पीचेस हैं उसके हवाले से मैंने चेक करना है कि हाउ डू द पाकिस्तानी मीडिया पोर्ट्रेट in terms of first and second level agenda setting. Now the second aspect, Pakistani media. Pakistani media is a huge social institution. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है वो there are dozens of electronic media, the news channels, and there are hundreds of newspapers working here being printed. So on what media you are going to conduct research on? ठीक है, तो उसमें आपने चूज करना है कि कोई एक चैनल या कोई 2 चैनल और फिर उनका कंपैरिजन। एंड देन इन वन चैनल, फॉर इंस्टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन वन चैनल देयर आर डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स, वी हैव 7 to 11 प्राइम टाइम। उन 4-5 घंटे के अंदर जो है वो एक हफ्ते के अंदर 25 प्रोग्राम्स हैं और एक टीवी चैनल के हैं। और अगर एक साल की बात करें तो इट वुड बिकम अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। So what you have to do is you have to confine yourself here again कि आप कौन सा चैनल लेंगे, उसका कौन सा टाइम स्पेन लेंगे, और फिर दूसरा कौन सा चैनल लेंगे और उसका टाइम स्पेन क्या लेंगे, और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। यस, एक ही प्रोग्राम कर लेंगे, एक ही चैनल कर लेंगे। सो इस तरह से आपने उसको टॉपिक को नैरो डाउन करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज, कैन द प्रॉब्लम रियली बी इन्वेस्टिगेटेड? Every society has certain taboos, some no-go areas. You see, we admit it or not. In every society, everywhere there are certain do's and do nots. There are certain, red lines. There are certain no-go areas. For instance, you even if we don't talk about that, if we talk about some softer things, you see, हम ये चाहते हैं जी कि आप ये चेक करें कि जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने मीडिया को यूज करके कितने पैसे कमाए हैं। Do you think that these vloggers would tell you exact number of dollars and rupees that they have earned in last 10 years or so? Not at all. So you have to keep it in mind कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो वाकई इन्वेस्टिगेट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। एक इस लिहाज से है, दूसरा मेथोडोलॉजी के लिहाज से भी है कि उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी हमारे पास अवेलेबल भी है या नहीं है। देन कम्स कैन the third question is, can the data be analyzed? उसका analysis of data in quantitative and qualitative research, there is a huge debate about the techniques that we use in analysis of data. So there are pros and cons for each and every methodology. So you have to decide and you have to be very clear
about the method of analysis that you are going to employ in your research study. अगर तो वो आपकी स्टडी के अंदर कोई appropriate relevant methodology available है, तो फिर तो आप जो है वो अपने उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, वरना उसको यहाँ छोड़ दें या उसको रिवाइज कीजिए. ठीक है. द फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट. अगर प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है तो उसका सोल्यूशन भी सिग्निफिकेंट होगा. और सिग्निफिकेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है कि इज दिस जनरलाइजेबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस जनरलाइजेबल. I mean, generalizable means that what you find out as the answer of the question, can you apply it on all the people? Again, in quantitative and qualitative research, there are differences. I mean, difference of opinion. For instance, in qualitative research, there is a criticism by the quantitative researchers that the findings of qualitative research are hardly generalizable. Because qualitative research is always subjective. And as far as if we talk about the interview, तो इंटरव्यू जो है वो बहुत महदूद लोगों का होगा. जब क्वालिटेटिव होगा तो उसको फिर जनरलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. फॉर इंस्टेंस, somebody comes in your classroom and asks you, what do you think about your teacher? Okay, so either he has to ask this question to all this class, all the 50 people, or he would ask this question from 5 out of these 50 people. Now, once you ask this question from the 5 out of 50, there will always be a question, there will always be an objection. How can you see that the opinion of these 5 people is generalizable to the whole 50? So that is a question. But in general terms, you need to be very clear that the findings that you are finding from the analysis of the data, they should be significant and they should be generalizable. Okay, the next question comes, what costs and time are involved in the analysis? ये मैंने आपको शुरू में बताया, जैसे जब हम टॉपिक चूज कर रहे थे, नैरो डाउन कर रहे थे, तो you have to be very clear that suppose you are conducting, you are writing your dissertation, BS level or MSc level or MS level or PhD level, you always have to complete it within a given time frame. इसमें तो फिर भी आपके पास महीने और सेमेस्टर और साल होते हैं. अगर आप फील्ड रिसर्च के अंदर हैं, अप्लाइड रिसर्च के अंदर है, तो उसमें तो आपके पास आवर्स और मिनट्स होते हैं या मैक्सिमम वीक्स होते हैं. वीकली प्रोग्राम है तो आपके पास हार्डली 4 से 5 दिन होंगे एक काम के लिए. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि द टॉपिक दैट यू हैव चोजन फॉर द रिसर्च, you can conduct this research within the stipulated time period. अगर नहीं तो फिर आप उसको मजीद narrow down कीजिएगा. The seventh question is the planned approach appropriate to the project? ये this has to do with the question number 3 also, कि जो आप डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको जो एनालिसिस करने का तरीका है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द एनालिसिस ऑफ डेटा, इसके लिए जो आपने मेथोडोलॉजी डिवाइस की है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है. अब ये मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट इज दिस मेथोडोलॉजी एंड हाउ वी चूज इट, हाउ वी सिलेक्ट इट, हाउ वी डिवाइस इट. वी विल हैव अ डिफरेंट लेक्चर, अ कंप्लीट लेक्चर ऑन the methodology. We will be talking about all these things in that lecture. But here you have to be clear in your mind, in your approach, that the method you are choosing, the approach you are employing, that is relevant to find out the answer of the given question. Last question is there any potential harm to the subjects? Suppose you are conducting a survey. You see, like I've just given you example, okay, you go and ask the vloggers how much money you have earned in last 1 year. So first of all, there will be very few people who would tell you, and amongst them there will be very few people who would tell you the exact number. Okay, and why would they tell you? Because they know that if we declare it publicly, the other day FBR would be on our doorstep. You see, you haven't paid taxes. So in terms of economy, in terms of financial matters, they won't tell you कि हमारे ऊपर जो कोई sanctions लग जाएंगी या हमारे ऊपर FBR आ जाएगा, हमारे पास taxes की जो है वो लग जाएंगे जी कि आपने टैक्स दिया या नहीं दिया. Similarly, there could be other things that can harm a respondent
when you ask him or her some question. For instance, we have students from Jammu Kashmir here in Pakistan, you see, and they are studying here in Pakistan. When you want to conduct research on those students, they will be somehow reluctant to give you the answer regarding the governance of the government, the occupied government in that area. Why? Because they know that once this research will be public, I'll be held responsible that you are propagating against us. Okay, so in that particular kind of scenario, you have to be very much clear that whatever you are asking from your respondents, make sure their answers are not harmful for them, or your research once it's public is not going to be harmful for them. There could be different ways to minimize this harm. You don't ask such questions, or if you have to ask those questions, you don't public the name of the respondents, or there could be other ways, I mean, which can you imply while you are conducting this kind of research. So all these 8 questions, my dear students, you have to keep in your mind when you are conducting research. These 8 questions, and the answers of these 8 questions would determine the relevance of the topic that you are working on for your research project. I hope this lecture would help you in your research project, especially when you are conducting research, and when you are selecting a topic for your research project. So if you have any question, you can pose those questions in comments and you can ask me directly. Thank you very much. Assalamu alaikum.